Yes, thank you, Arvind sir. Uh, it's an honor for all of us to be Why is part it of this. little low? Can you raise it little bit? It is little. Yeah, am I Yeah. audible, sir? Yes, yes. Now very good. Thank you. Yes, thank you. Yeah, good afternoon, all. Thank you, Arvind ji. Uh, Shri Sanjay Rathi ji, Principal ADG, Director General Taxpayer Services. Uh, we have with us Shri Raju Jetli ji, Assistant Commissioner of Customs. Shri Sanjay Kumar ji, Pradeep Janjaria ji is not here, and Shri Shantanu Bhatkambar, my fellow co-panelist. CBIC word has become synonymous with trade facilitation today. In the process of EXIM cargo clearance, the measures undertaken today for trade facilitation by CBIC stand out head and shoulder above all other stakeholders in process of clearance. And I would also very proudly say that being part of the setup of customs, we always cite example of CBIC to other private stakeholders that let's take a cue from CBIC how to roll out trade facilitation measures and how these trade facilitation measures are implemented at grassroots level. Uh, Sir, uh, while everybody, the entire EXIM community, trade and industry knows the effectiveness of various measures such as direct port delivery, direct port entry, single window, bringing all the PGS on board, Turan custom, the digital measures such as uh, going paperless totally under Turan customs, e-seals, e-gate pass, and the latest one was CBLMS, which was one of the uh, major digital initiative by CBIC, giving e-delivery orders, which totally preventive manual to and fro movement of delivery orders, and it made a complete foolproof system in the custom clearance segment, bringing stakeholders like shipping lines, airlines, the forwarders on it was also one of the major facilitation measures. Friends, the new kind of warfare today on a global scenario is going to be on economic front. And the only way to realize the dream of becoming the third largest economy globally, which our Honorable Prime Minister has been driving, is to create a congenial and a environment which can nurture the trade and industry with trade and trade facilitation. It's an important tool that our trade and industry can grow leaps and bounds. How the effectiveness of various measures which have been rolled out by CBIC and Government of India are made effective to the grassroots level for our bona fide trade, that is importers, exporters, and all the stakeholders such as custom brokers, forwarders, the participating government agencies. We need to create mindset of growth. We need to create an environment where compliant trade and industry has no fear while dealing with trade and while dealing with in day-to-day process of custom clearances and also post clearance matters. It is time that now we go to a next generation of trade facilitation reforms. What has been conceptualized last 5 to 6 years, to grow to a next level, we need to do that. Exports needs further
round of reforms, which CBIC is working very intently on this. Sir, there are various measures which our good office we would seek that a bona fide trade today faces a lot of situations where they find that basic important aspects which have already been announced or what is there given in the timelines under the act are sometimes difficult to follow at grassroots level, at field level. Let us have a mechanism, create a mechanism of feedback and facilitation for this section of trade and industry. We want that if we have to grow to a $5 trillion economy, our exports have to grow. It needs to be export-led growth, and trade facilitation measures will play a very major role. While the self-assessment, the single window clearance, the direct port deliveries, the Turan customs have had its share of growth component in our India's growth story. But this is the time when we need to gather, take a trade feedback, pinpoint the measures and ensure its effectiveness at grassroots level is very crucial. And we seek your support. Let's create a mechanism. As Federation and BCPA, we are available at all possible nook and corner of the country, right from gateway ports, airports, ICDs, land border custom stations, everywhere. So let's gather. We will provide those feedback. We are there with CBIC to ensure that how we can go to a next level. Thank you, sir, for this wonderful opportunity given to us. Thank you. Thank you, Dushyantji. Thank you very much. And now you just heard Shri Dushyant Mulani, President BCBA and Chairman of Federation of Freight Forwarders Association. It's always a pleasure to have him on panel, as he's always coming up with good ideas, very proactive and it's insightful inputs on almost everything that relates to customs and the other stakeholders areas. Now, moving on to other trade panelists. Our second trade panelist is Sri Shantanu Bhadkamkar, Chairman, Maharashtra State Development Council of ASSOCHAM. He is the Managing Director of ATC Global Logistics Private Limited. Now, I welcome him to address the participants, please. Sir, you are not. Voice is not audible. Please unmute yourself, sir. You are not audible. Yeah, I hope I'm audible now. Yes, now you are audible. Namaskar and good afternoon, everyone. And sincere thanks for this opportunity. And I will make best of the 4 minutes I have. And I will complete within time by using a timer. First of all, thanks again for this opportunity. Thanks, Ratiji and team. One of the most important factor I want to bring about is customs is the most accessible department when it comes to trade and government matters. And this webinar is one of the point in case. In addition, there are numerous forums for trade interaction with the customs and trade bodies interaction with the customs. I would also say that custom gives more opportunities to redress grievances than any other department. And this I say with great sense of responsibility, as I have been part of various chambers that has dealt with other departments, particularly when it comes to state government and municipal corporations. I can say customs administration mechanisms, both administrative and quasi-judicial, are absolutely excellent and superior. And quite often we discuss that these measures are better than judicial remedies. I would also add emphasis to what Dushyant said is the clear procedures and rule of law in customs is very effective and almost everything is policy driven. I therefore recommend all the trade
customers and fellow custom brokers to use all these forums effectively and to the full extent and facilitate trade facilitation. I must also add here that the trade, which is our customers, importer and exporters, should learn from the customs department about redressal mechanism, as there doesn't exist any in the customers or import exempt trade. Going to what we expect further, of course, we have elevated expectation. I will go back to 1993 when there was a big seminar in Singapore on multimodal transport and trade facilitation. The New Zealand customs officer then said that the role of New Zealand customs is trade facilitation and it is only one of the tasks to collect revenue. When we shared this with customs in 93, which is more than 30 years back, I would say that the response was far from positive, to say the least. But today I can say with authority that Indian customs is leading the way and we can be a global role model. I can say this with authority as I have been attending World Customs Organization meetings on behalf of IFCBA, which is our international federation, for past 6 years. Besides, IFCBA has been chairing the private sector consultative group of the World Customs Organization. However, coming to certain policy considerations, while we agree that there should be need for fear of law and we should weed out the bad apples from the basket and bad fish from the pond, but the action should be proportionate and judicious. There is a concept called baker's dozen. A baker's dozen is of 13 and not 12 because in Rakunan era, people were so worried about the enforcement that they added one more thing, and probably we are all suffering this syndrome today. And I would only emphasize on what Sanjay Rathiji, additional DGS, mentioned, that the need for intelligent implementation is critical, and therefore we must separate the chaff from the grain. And let me express our sentiment that even 1% of cases where penal action is excessive or the treatment is unfair has a ripple effect and big effect, because on the person who has been treated unfairly, there is a cascading effect. Lastly, I would say that custom broker's image builds customs image. Our images are integrally linked because we are the face of customs to the public. And as we say that globally, the next battle is not going to be physical terrorism, but trade wars. And this is where we must cooperate together and work for prosperity. Thank you, and thanks again for this opportunity. I am complete here. Thank you. Thank you, Shantanu Bhatkar ji. And as you have mentioned, means the incident of 1993 and the last 31 years, means we have also transitioned a lot from very strong regulating agency to aggressively a facilitator nowadays. So with this particular motto of facilitation is the basic reason why we are here today with this webinar. So moving on to our main part of our today's webinar. Now I would like to introduce our speaker for today's webinar, Shri Raju Jetli, Assistant Commissioner of Customs, Mundra. Shri Raju Jetli, with educational qualification of MSc, MBA, LLB, has around 35 years of experience of working in all the 4 formations: Customs, Central Excise, Service Tax, and GST, and also has a more than 16 years of experience in training and lecturing within and outside the department. He was awarded the GST Day Commendation Certificate by the Honorable Finance Minister of India in July 2022. He is a guest faculty to NASIN and Training Institute of SGST. He has conducted seminars, webinars for trade and industrial organizations in Gujarat Chamber of Commerce and Industry, Rajkot Chamber of Commerce, FIEO, CII, GIDC, Rotary Club, etc. Shri Raju has also conducted training sessions for the Income Tax Department at Direct Taxes Training Institute, Institute of Company Secretaries of India, Institute of Cost Accountants, Chartered Accountants and Ministry of MSME, ONGC, Chemexil, Ministry of Commerce, and has also participated as departmental representative in panel discussions in various electronic and print media. I request Shri Raju Jetli to present his presentation.
And I also request that Sri Jetli, just after completing his presentation, will also take the questions if there are any from the participants. Those will be available on the screen, and some of them might be on the text also. Others who want to raise their hands can also raise their hands. Shri Raju Jetli ji, please, over to you, sir. Respected Principal ADG Sir, DGTS Mumbai Zonal Unit, respected senior officers of the department, my co-panelists, friends, ladies and gentlemen. Namaskar, Pranam, Jai Hind, and a very good afternoon to you all. Hope I am audible. You are audible. You are audible now. A real privilege to be a speaker on this webinar. Thank you, DGTS Mumbai Zonal Unit. And it also gives me an opportunity to connect with Shri Sanjay Rathi sir after around 20 years or so. Sir, if you remember, you were in Ahmedabad and holding charge of audit. I was there in audit section working under you. Maybe around 2003, 4, 5, 6, 3, 4. Frankly speaking, I really don't remember. It has been so many years. Yeah. But anyway, would have been a wonderful association, and it is good to bond you with again. Please continue. Thank you, sir. So today's topic, customs trade facilitation measures and overview. And medium of communication would be a mix of English and Hindi. And let me tell you at the very outset that customs is totally in sync with the goal of trade facilitation. And I have completed 35 years of service in the department and can say with certainty that customs has undergone a radical transformation in these years. So, though we are saddled with a lot of enforcement functions, customs is at forefront of facilitation initiative, and CBIC is committed to achieve the dream of Honorable PM of $5 trillion economy. So now I would start my PPT, and though my face would not be on the screen, I would rather prefer that PPT is visible on the screen to all the participants. Yes, sir, visible. Hope the PPT is visible. Yes, PPT is visible. As you all know, traditional function of customs has been the assessment and collection of customs duties on the importation of goods and at times on exportation of goods. So this has been a traditional function. The fraternity here is well aware of what I am speaking and what I am going to speak. So nowadays, since so many years, focus has been on the facilitation, and as you all know, Indian Customs Department is administered by CBIC, Central Board of Indirect Taxes and Customs, and there are number of initiatives taken by CBIC, and these initiatives are aimed not only at faster clearance of goods, which is called as dwell time in customs and trade parlance, and it is focused at minimizing costs, but have minimum human intervention in the process of clearance. Some of the important and far-reaching initiatives are being discussed in next slides. So these are the procedural changes over a period of time. Bill of entry is to be filed before the end of the day preceding the day of arrival of vessels, aircraft, vehicle, and legislative changes have been made in section 46 accordingly. And board chapter number 8 2021 and board instruction number 5 2021, I suggest those may be referred for those changes and all procedural aspects relating to the amendments made. Customs clearance over the years has undergone a paradigm shift. The attention has expanded to trade facilitation, regulatory compliance, and intelligent enforcement. I already said that it is a very difficult role, and a balance is to be maintained by the custom officers
they have to look for trade facilitation and they have to regulate the law as well. So it's a very difficult task. You would all appreciate कि बड़ा डिफिकल्ट है दोनों साइड्स को बैलेंस करना, और हम लोग ये चाहते हैं कि आप का जितना सहयोग सहकार रहेगा, जितना आप लोग ठीक से डॉक्यूमेंट्स हमें प्रेजेंट करेंगे, तो हमें उतनी ही सुविधा होगी आपको फैसिलिटेट करने में। तो एक जो इम्पोर्टेंट प्रोसीजरल चेंज हुआ है वो that is related to post clearance audit concept. Those who are old timers, they would know that in early days there was a concept of concurrent audit, but now there is an by introduction of PCA, all you can clear the goods and rest of the things will be taken care of by the department later on. अगर कुछ होगा तो आप एक बार अपने क्लियरेंस कर लीजिए और उसके बाद डिपार्टमेंट जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स को स्क्रूटिनी करेगा, और यदि उसमें कोई ड्यूटी का इन्वॉल्वमेंट या कुछ इश्यू होगा तो देन इट विल बी नोन टू यू फॉर पेमेंट, बट द गुड्स विल नॉट बी केप्ट ऑन होल्ड एंड यू कैन टेक द गुड्स। तो ये दिस इज अ वेरी वेलकम मूव। तो आजकल तो थीम बेस्ड ऑडिट एंड प्रीमाइसिस बेस्ड ऑडिट एंड अदर ऑडिट्स विद कुछ फ्रीक्वेंसी उनकी प्रिस्क्राइब की गई है, फ्रीक्वेंसी पे किए जाते हैं, बट गुड्स को होल्ड नहीं किया जाता है। तो दैट इज अ वेरी वेलकम प्रोसीजरल चेंज। एंड एक जो फैसिलिटी ऑफ डेफर्ड पेमेंट ऑफ ड्यूटी टू एईओ है, दैट इज ऑल्सो मतलब इट कैन बी सेड टू बी अ बून, बिकॉज डेफर्ड पेमेंट ऑफ ड्यूटी, अगर मैं बात करूं 90s की, तो नोबडी वुड हैव इमेजिन्ड कि डेफर्ड पेमेंट ऑफ ड्यूटी भी हो सकता है, बट नाउ इट इज अ रियलिटी। डेफर्ड पेमेंट ऑफ ड्यूटी की फैसिलिटी टू एईओ हैज बीन एक्सटेंडेड, so it gives, इसलिए मैं बार बार हर वेबिनार में कहता हूँ कि एवरीबडी शुड ट्राई एंड गो फॉर एईओ। इट्स अ बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कस्टम्स का। तो एईओ में अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, उसमें डेफर्ड पेमेंट और ड्यूटी का जो बेनिफिट है, इट विल सेव लॉट ऑफ कॉस्ट एंड यू गेट money for your working capital. Now we come to next slide, digitization of clearance process, iSgate and e-Sanchit. तो अगर आज से हम 2017 से पहले की भी बात कर लें, अगर 2000 के आसपास की कोई बात करें, तो everybody those who were coming to the port for clearance of their goods, they would have to go desk to desk with their physical documents. तो आज ये डिजिटाइजेशन की वजह से ही ये संभव हो पाया है कि आज हर आप डॉक्यूमेंट अपना जो है वो पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं, स्कैन डॉक्यूमेंट थ्रू ई संचित प्रोग्राम which was launched in 2017 by CBIC and now presently CBIC. तो पूरा जो प्रोसेस है, मतलब in nutshell, मतलब endeavor is to have all processes and sub processes seamless by having big end-to-end digitization, beginning to end digitization, which results in faster movement of good, and it saves time, it saves money, it is cost effective. So digitization of clearance process to have through e-Sanchit, I always say it is a boon. The importer expert need not go to customs station to provide documents in physical form. और इसी सिलसिले में, इसी कड़ी में जो तुरंत सुविधा केंद्र एस्टैब्लिश किए हर कस्टम हाउस पे, तो देर इज ऑल, अगर कहीं कोई डिफेसमेंट या वैलिडेशन की रिक्वायरमेंट है तो एवरी कस्टम हाउस हैज अ सुविधा केंद्र विद इन इट, एंड एवरीबडी हु नीड्स सच डिफेसमेंट और वैलिडेशन, दे कैन इमीडिएटली कॉन्टेक्ट TSKs. तो मैं मतलब ये नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब हर प्रॉब्लम मतलब सॉल्व हो गई TSK से, बट मतलब not to say there are no problems or no glitches, but endeavor is to resolve it very very quickly.
तो यही डिपार्टमेंट का एंडेवर है। और टीएसके मैं देखता हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मुंद्रा में, एंड आई ऑल्सो हैड एन एक्सपीरियंस अहमदाबाद में मैं देखता था, बट टीएसके इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। तो टीएसके, क्योंकि मैं खुद असेसमेंट वर्क देखता हूँ मुंद्रा पोर्ट पे, तो बट फ्रॉम अदर पोर्ट्स ऑल्सो वी गेट mails to Suvidha Gens for faster clearance. So TSK is doing great job. Nothing is perfect and never can be, but हम सबका एक ही मकसद है कि जितना हो उतना जल्दी से गुड्स को रिलीज किया जाए, तो पोर्ट्स पे कंजेशन कम किया जाए। तो टीएसके एंड डिजिटाइजेशन की जो प्रोसेस है, ई संचित पोर्टल, ये सब इसी कड़ी में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और क्लियरेंस ऑफ गुड्स जो है जितना फास्ट हो सके उसी में प्रयत्न रहते हैं। आई थिंक सबका एक्सपीरियंस ऐसा ही होगा जहां तक मैं अंदाजा लगाता हूँ। तो ये सीबीआईसी जो है वो आप सब जानते हैं, फेसलेस, पेपरलेस एंड कॉन्टैक्टलेस कस्टम्स अंडर इट्स अम्ब्रेला ऑफ तुरंत कस्टम्स प्रोग्राम, जो मैंने अभी टीएसके की बात करी। तो तुरंत कस्टम्स प्रोग्राम जो है वो फेसलेस है, पेपरलेस है, कॉन्टैक्टलेस है, एंड जो स्विफ्ट विंडो है सीबीआईसी का, तो स्विफ्ट as part of ease of doing business initiative, single window, it allows importers and exporters the facility to upload and lodge their documents online at a single point, resulting into reduced human interface, increased transparency. The SWIFT, it has been very, very successful and very useful and cost effective to all importers and exporters. We are evolving continuously. It's all work in progress. So we need support of all the stakeholders. Now we come to risk management system in customs. RMS को मैं game changer कहता हूँ. RMS is a real game changer. The procedure of verification of export and import goods has also been simplified. And मतलब RMS को आप ऐसे समझ सकते हैं कि RMS ऐसा मान लीजिए कि कुछ मतलब 20-25 ऑफिसर्स अलग अलग फील्ड के जो स्पेशलिस्ट्स हैं वो कहीं सिस्टम में बैठे हुए हैं, और वो आपके डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन कर रहे हैं और उनको रिस्क पैरामीटर के हिसाब से उनको रिस्क क्राइटेरिया जो उसके अंदर प्रीफेड है उसको जांच रहे हैं। कंसाइनमेंट फॉर वेरिफिकेशन आर सिलेक्टेड ऑन रिस्क क्राइटेरिया प्रीफेड इन द आरएमएस। तो जो काम ऑफिसर्स किया करते थे पहले वो अब आरएमएस करता है। तो आरएमएस में क्योंकि रिस्क क्राइटेरिया प्रीफेड है तो वो अकॉर्डिंगली ऑन द रिस्क पैरामीटर ही एग्जामिनेशन और असेसमेंट के लिए डॉक्यूमेंट्स को पिकअप करता है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आरएमएस से ही क्लियर हो जाते हैं। ये मेरे पास एक कस्टमर्स मुंद्रा की स्टैटिस्टिक्स है फरवरी 24 की, जिसमें करीबन आप देख सकते हैं कि 84%, more than 84% of bill entries were cleared with no assessment and no examination, and for AEO clients it was around 94%, and for non-AEO clients it was more than 81%. तो ये इजी और स्विफ्ट क्लियरेंस ऑफ कार्गो में बहुत ही कारगर है आरएमएस, एंड मतलब कॉस्ट इफेक्टिव तो है, नीडलेस टू से इट इज वेरी वेरी, मतलब इट रिजल्ट्स इनटू ऑल कॉस्ट इफेक्टिव मेजर्स फॉर द ट्रेड एंड इंडस्ट्री. Bills of entry and IGN filed electronic ICS through the service center or the ISKit are transported by ICS to the RMS. वो जो डेटा है इट इज प्रोसेस्ड थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेप्स एंड प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट. तो वो आरएमएस जो क्या कर रहा है वो मतलब स्टैंडर्डाइजेशन कर रहा है चीजों का. मतलब इट डजंट डिपेंड ऑन पर्टिकुलर ऑफिसर्स कि भाई आज इसको हमको असेसमेंट लेना है या एग्जामिनेशन में लेना है. वो किसी ऑफिसर का डिसीजन नहीं है, आरएमएस का ही डिसीजन है. किसी की विम्स एंड फैंसीज इसमें काम नहीं आएंगी, है ना. किसी का पर्टिकुलर जजमेंट
जो है वो काम नहीं आएगा। मतलब जो सिस्टम के अंदर प्रीफेड है, आरएमएस खुद ही उसको देखेगा और वो इंस्ट्रक्शन देगा अप्रेजिंग ऑफिसर्स को और एग्जामिनिंग ऑफिसर्स को कि अगर एग्जामिनेशन करना है तो क्या देखना है, या आउट ऑफ चार्ज ऑफिसर्स को वो बताएगा कि क्या देखना है। तो इट इज यानी प्रोसेस फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, उसमें मतलब फास्टर क्लियरेंस तो है ही है, और जहां भी असेसमेंट और एग्जामिनेशन है वहां भी एक स्टैंडर्डाइजेशन है। ये नहीं है कि किसी के कोई अपने मन मुताबिक कुछ करेगा। सिस्टम गिव्स एन इंस्ट्रक्शन एंड अकॉर्डिंगली दोज इंस्ट्रक्शंस आर टू बी सीन एंड फॉलोड। तो देयरफॉर मतलब आई ऑलवेज से कि आरएमएस जो है वो तो वाकई में मतलब जो कस्टम क्लियरेंस का प्रोसेस है उसका गेम चेंजर जो है वो आरएमएस को ही मानना चाहिए। Improvement in, now the next slide is improvement in ease of doing business. So India has seen significant improvement in the World Bank's ease of doing business. आप सबको पता ही है रिसेंट ईयर्स में अपना जो रैंकिंग है वो काफी अच्छा हो गया। तो improvements in EWP index has been made possible largely due to several reform measures initiated by CBIC. एक ई संचित हमने डिस्कस कर लिया है, DPD, DPE, everybody knows, it will come in subsequent slides. SWIFT we have discussed, revised AU program and RFID e-seal program that we will discuss in the coming slides. तो ये सब जो है वो कंबाइंड इफेक्ट उनका यही है कि इससे क्लियरेंस का टाइम कम हो गया एंड कॉस्ट ऑफ क्लियरेंस जो है वो रिड्यूस हो गई। गवर्नमेंट का जो नेक्स्ट टारगेट है, इट इज टू बी इन द टॉप 50 ऑफ द यूडीपी रैंकिंग्स। ये आप देख सकते हैं, इंडिया हैज जंप्ड 79 पोजीशन फ्रॉम 142nd टू 63rd 2019 में इन वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2020। इसके बाद का डेटा भी अवेलेबल नहीं है, बट आई एम वेरी श्योर कि हमारी जो पोजीशन है वो गिवन द एनवायरनमेंट एंड गिवन द माइंडसेट ऑफ all stakeholders including importers, exporters, CHAs and all other shipping lines, तो हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रैंकिंग डेफिनेटली नेक्स्ट जो रिपोर्ट आएगी उसमें इंप्रूव हुआ ही होगा। आई एम वेरी वेरी श्योर अबाउट इट। ये भी सब वही जो हमने डिस्कस कर लिया, इंप्रूवमेंट इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के जो फैक्टर्स हैं वो यही हैं, AUO स्कीम है, डायरेक्ट पोर्ट एंट्री, डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी, these are all contributing to ease of doing business and improving the ranking of the country. अब थोड़ा सा हम ये DPD और DPE एक बार क्विकली देख लेते हैं। तो ट्रेडिशनली सभी इंपोर्ट कंटेनर्स जो अब्रॉड से किसी और कंट्री से आते थे इंडिया में या एक्सपोर्ट के लिए जाते थे, वो सब CFS में पहले जाया करते थे और वहीं सब क्लियरेंस का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट होता था। तो अब इसमें होता यह था कि भाई ये बड़ा टाइम चला जाता था एंड कॉस्ट एक्सपोर्टर और इंपोर्टर्स के लिए बढ़ जाती थी। तो अब DPD जो स्कीम है उसमें eligible import consignments as per RMS are delivered to the importers directly from the port. वो सीधा पोर्ट से डिलीवर हो जाते हैं इंपोर्टर्स को। और DP में सिमिलरली मतलब एलिजिबल एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट्स एज पर RMS गेट डायरेक्टली एंट्री टू द पोर्ट विदाउट बीइंग शिफ्टेड टू CFS। तो ये भी बड़ा मतलब DPD और DP जो है वो तो मतलब बहुत ही मतलब वेलकम स्टेप है। एंड मतलब मैं इस यानी सर्टेनिटी से इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पोर्ट पे देखता हूँ तो, और मतलब मेरे पास डायरेक्ट फीडबैक है जो इंपोर्टर एक्सपोर्टर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स का, एंड एवरीवन इज मतलब सेटिस्फाइड विद दिस initiative of DPD and DPE. It has really resulted in saving costs to the importers and exporters. Now we come to the next slide, authorized economic AU scheme. तो AU scheme जो है मैं मतलब इसका डायरेक्ट विटनेस हूँ। मैं मतलब when I was posted in Ahmedabad Chief Commissioner Office, so I have seen मतलब how AU cell works
and it was this AEO program was started in 2011. It's a monumental effort by Indian Customs. मतलब उसका जो aim है, aim is to enhance facilitation and ease of doing business, trading across the boundaries. तो aim उसका यही है, supply chain जो है उसमें certainty लाना, security लाना, facilitation of movement of all legitimate goods and coordination amongst the various stakeholders involved in the process. तो ये आप स्लाइड में देख सकते हैं, इसकी जो बेनिफिट्स हैं वो मैंने लिखे हुए हैं. The benefits depending upon the category of AEO status. So there are 3 tiers: T1, T2 and T3. The highest level of accreditation being T3, and there is one 4th level also, that is known as LO, which covers all entities other than importers and exporters. So T1, T2, T3 depending on your स्टेटस और कुछ बेनिफिट्स उसमें किसी में T1 में थोड़े से कम है, T2 में उससे ज्यादा है, T3 में उससे ज्यादा है. तो बट ओवरऑल बेनिफिट्स जो है T1, T2, T3 में वो यही है. आप इसमें देख लीजिए, उसमें डेफर्ड ड्यूटी पेमेंट का बेनिफिट है, DPD है, DPE है, फास्टर प्रोसेसिंग ऑफ रिफंड्स है, प्रायोरिटी स्कैनिंग ऑफ कंटेनर्स है, फास्टर डिस्पर्सल और ड्रॉबैक है, 24/7 क्लियरेंस अवेलेबल है. Even relaxation in amount of bank guarantees required in different processes, facility of self sealing है, और mutual जो recognition benefits हैं with other countries, trade facilitation by foreign customs administration (MRA), those are also available to all registered AEOs, authorized economic operators. मतलब इसका जो पूरा है ना, ये वॉफ टू वेयर हाउस का सीमलेस मूवमेंट का कंसेप्ट है AEO का. वंस यू आर रजिस्टर्ड एंड हैविंग अ AEO स्टेटस, सो योर गुड्स विल हैव अ वेरी सीमलेस मूवमेंट ऑफ फ्रॉम वॉफ टू द वेयर हाउस. ये इसका अगर हम नटशेल में देखें तो AEO का जो पर्पस है वो यही है कि एकदम सीमलेस मूवमेंट प्रोवाइड करना. एंड कॉस्ट इफेक्टिव तो है ही, नीडलेस टू से कि आपके आप अंदाजा लगा लेंगे, आपको 10 अगर आपके शिपमेंट आएंगे तो मे बी एक आध शिपमेंट जो है वो आपका एग्जामिनेशन में चला जाए. बाकी अदरवाइज तो RMS क्लियरेंस ही है इसमें. इफ यू आर रजिस्टर्ड एज एन AEO तो इट इज सो कॉस्ट इफेक्टिव, है ना. और आपकी होल्डिंग कॉस्ट जो whatever there is a fee of 10,000 rupees that one has to pay while getting registered. तो वो तो आपकी होल्डिंग कॉस्ट इतनी रिड्यूस हो जाती है, डिटेंशन चार्जेस, वेयरहाउस चार्जेस रिड्यूस हो जाते हैं. तो द एक्सपेंस दैट यू मेक while registering for AEO, तो दैट गेट्स कंपेंसेटेड वेरी फास्ट. तो मेरा मैं पर्सनली सबसे कहता हूँ भाई, AEO तो आपको स्टेटस लेने में यानी इट गिव्स अ सेंस ऑफ यानी प्रेस्टीज ऑल्सो कि वंस यू आर अ स्टेटस होल्डर, है ना. और प्री रिक्विजिट्स भी इसके ना बहुत सिंपल है. यानी कोई इसमें बहुत ऐसा डॉक्यूमेंटेशन नहीं है. ओनली थिंग इज द एंटिटी हैज टू बी लीगली एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया, और वो 3 फाइनेंशियल ईयर्स से काम कर रही होनी चाहिए, और वो कंप्लायंट होनी चाहिए फाइनेंशियली भी, लीगली भी. MSME के लिए और बेनिफिट्स हैं. MSME के लिए 2 इयर्स का है. आपने 25 कस्टम्स डॉक्यूमेंट किए होने चाहिए. MSME के लिए और कम है, 10 डॉक्यूमेंट किए तो भी वो आपको प्रीरिक्विजिट फुलफिल हो जाता है, तो आप रजिस्टर कर सकते हैं. तो रजिस्ट्रेशन जो है वो www.aeoindia.gov.in पे बड़ा आसान प्रोसीजर है और वन टाइम प्रोसेस है. आप वंस आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए, उनका सक्सेसफुल वेरिफिकेशन हो जाए तो फिर आपको एक्रेडिटेशन ऑनलाइन सर्टिफिकेट मिल जाता है. तो T1 जो है वो 2 साल के लिए वैलिड है. T2 और LO, T3 और LO जो है वो 3 साल के लिए वैलिड है. और उसका जो रिन्यूअल है वो भी ऑटो रिन्यूअल है. आपको सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट ही अपलोड करने हैं. तो AEO जो है यानी हम देखें तो इट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू एक्ट एज रिलायबल पार्टनर्स ऑफ द गवर्नमेंट. इतना ट्रस्ट
बिल्डिंग है, एयू का एक बार आपने रजिस्ट्रेशन दे लिया तो गवर्नमेंट मतलब ये मान रही है कि भाई आप जो है वो सब चीजें इन अकॉर्डेंस विद द लॉ और मतलब उससे करोगे तो जिससे गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी मतलब दे कैन लुक इनटू अदर एस्पेक्ट्स और आपका जो है क्लियरेंस ऑफ गुड्स वो फास्टर हो जाए। तो इट इज ऑल म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन गवर्नमेंट एंड द ट्रेड। तो एईओ तो मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है कि एवरीबडी शुड गो फॉर एईओ रजिस्ट्रेशन। Now we come to faceless contactless custom, that is faceless assessment. So Indian Customs initiated faceless assessment in imports in June 2020 at selected location, which has now been rolled out all over India. तो फेसलेस असेसमेंट जो है ना वो मतलब इसको हम मतलब ये एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, इसको आप ऐसा मान लीजिए कि एक वर्चुअल मतलब दो इट इज रियल बट मतलब यानी कि एक वर्चुअल कमिश्नरेट है जहाँ पे मतलब जो स्पेशलाइज्ड असेसमेंट ग्रुप्स हैं वो फंक्शन कर रहे हैं। तो आप ऐसा मतलब इमेजिन करके देखिए कि अगर जैसे इन मतलब ओल्डन डेज मतलब जैसे हम किसी एक जनरल एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाते हैं उसकी जगह पे जैसे हम स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं तो कैसा ट्रीटमेंट होता है। इफ यू हैव मतलब आई इरिटेशन देन यू गो टू एन आई डॉक्टर, तो ही विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू हैंडल योर केस। तो सिमिलरली जहाँ पे ये फेसलेस असेसमेंट ग्रुप्स हैं वहाँ फंक्शनल जो एक्सपर्टाइज है वो भी अवेलेबल है और मतलब फ्री फेयर और जस्ट असेसमेंट है। मतलब नोबडी नोज हु इज असेसिंग, मतलब एनोनिमिटी भी है, ट्रांसपेरेंसी भी है, फास्टर क्लियरेंस भी है। तो ये मतलब फेसलेस और कॉन्टेक्ट कस्टम जो है इट हैज बीन वेरी वेरी सक्सेसफुल। और जहां भी कहीं कुछ दिक्कत है या कुछ है तो देन तुरंत सेवा केंद्र ऑलरेडी अवेलेबल है तो उनके थ्रू। तो मेरा इसमें एक छोटा सा निवेदन है, सजेशन है कि जैसे फेसलेस असेसमेंट में तो मतलब इसको हम ऐसा मान लें कि ये जो असेसमेंट है मतलब 2011 से क्योंकि सेल्फ असेसमेंट इज इन प्लेस तो द बिल ऑफ एंट्री इज एक्चुअली असेस्ड बाय द इंपोर्टर, दैट इज द कस्टम ब्रोकर। तो कस्टम ब्रोकर जो बिल ऑफ एंट्री फाइल करता है वो एक तरह से असेसमेंट हो ही चुका है उसमें। तो कस्टम ऑफिसर तो उसका समझो फिर से एक बार उसको ऐसा हम मान सकते हैं कि रीअसेस करता है, पर फर्स्ट असेसमेंट इज ऑलरेडी डन बाय द कस्टम ब्रोकर हिमसेल्फ। तो उसमें जो की एलिमेंट्स हैं जैसे डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स है, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स है ना, लेवी ऑफ ड्यूटी सेस एक्सेट्रा, नेचर ऑफ गुड्स, अवेलेबिलिटी ऑफ योर नॉन बेनिफिट्स है, सीओ है, एडीडी एप्लीकेबिलिटी है। तो ये सब चीजें आप करेक्टली उसमें डाल दें, क्योंकि क्या होता है कि जब असेसमेंट में कोई बिल आता है तो कुछ उसमें क्वेरी रहती है। तो मतलब जो हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं जो हम उसके अंदर हम जो डेटा फिल कर रहे हैं वो डेटा अगर कंप्लीट होगा और डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड होंगे तो क्वेरी का फिर स्कोप नहीं होगा एंड इट विल गेट असेस्ड वेरी वेरी फास्ट। तो मैं जैसे बताऊं मैं कई बार देखता हूँ कि मेरे पास जैसे इफ सम बिल ऑफ एंट्री कम्स टू मी जो यानी सेकंड हैंड ओल्ड एंड यूज्ड मशीनरी है तो अब चार्टर्ड इंजीनियर सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी तो इट नीड टू बी अपलोडेड। मतलब उसमें देयर शुड बी नो स्कोप कि उसको बाद में अपलोड किया जाए वंस द क्वेरी इज रेज्ड। एंड वी हियर एंश्योर दैट क्वेरी जो है वो ऐसी हो कि जो यानी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेरी हो, ये बार बार मतलब क्वेरी ना हो। एंड द सेकंड क्वेरी शुड बी जनरेटेड फ्रॉम द रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेरी। तो आई ऑन माई पार्ट एंश्योर के जो सेकंड क्वेरी है इट शुड बी वेरी वेरी रीजनेबल एंड इट शुड कम only from the reply of the first query. First query should be so comprehensive that the importer gives complete reply and he is in a position to understand what the custom officer wants.
तो पहले मतलब ये बात तो यही है कि अगर जो भी आप डॉक्यूमेंट्स सबमिट करते हैं उसमें ये सब जो की एलिमेंट्स है वो देख लें, जिससे क्या है कि क्वेरी का स्कोप ना रहे। तो आपका सीटीएस ठीक होगा अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, तो आपका क्लासिफिकेशन मतलब आपके लिए इजी हो जाएगा। क्लासिफिकेशन इजी हो जाएगा तो लेवी ऑफ ड्यूटी एंड ऑल मतलब एडीडी एप्लीकेबिलिटी सब चीज आपकी वेरीफाई हो जाएंगी। और अगर उसके बावजूद भी कुछ है तो मतलब इट विल रिड्यूस द चांसेस ऑफ गेटिंग ए क्वेरी। तो because customs alone can't get the desired results, so everybody need to contribute. तो मेरा ये with folded hands my request कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो इस तरह से फाइल करें कि क्वेरी का जो स्कोप है वो मिनिमाइज हो जाए। तो ये की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेसलेस असेसमेंट जो है इट इंक्लूड्स anonymity in assessment for reduced physical interface between trade and customs, speedier custom clearance through efficient utilization of manpower. Third one is greater uniformity of, ये देख लीजिए ये जो greater uniformity है ना, वो जो क्या होता है कि जो क्योंकि ये मतलब सेक्टर स्पेसिफिक असेसमेंट है तो इट इज यूनिफॉर्म। और यानी दोज हु आर यानी connected with the faceless assessment they know that national assessment centers are in place। तो वो पूरा ये नहीं है कि आज एक पोर्ट पे कुछ अलग ढंग से हो रहा है, दूसरे पोर्ट पे अलग ढंग से हो रहा है। देयर आर नेशनल असेसमेंट सेंटर, देयर आर रेगुलर मीटिंग्स आर बीन कंडक्टेड। तो देयर आर मेनी थिंग्स मे बी मतलब कुछ चीजें ट्रेड को एज अ रिजल्ट के रूप में दिखाई देती होंगी लेकिन उसका प्रोसेस नहीं पता चलता होगा। बट द डिपार्टमेंट विद इन द डिपार्टमेंट देयर इज अ लॉट ऑफ एफर्ट टू सी के जो गुड्स हैं उसका फास्टर क्लियरेंस हो जाए एंड यूनिफॉर्मली विद ऑल ट्रांसपेरेंसी हो जाए। तो फेसलेस जो असेसमेंट है इट इज यानी बहुत ही अच्छा मतलब उसका फंक्शन है एंड रिजल्ट भी बहुत ही अच्छे हैं इसके। ये अनदर एक फैसिलिटेटिव मेजर्स बाय सीबीआईसी, import of goods at concessional rate of duty for specified end use। अब मैं इसका थोड़ा सा क्विकली ना मतलब मैं इसका एक बैकग्राउंड थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि आई हैव वर्कड मतलब आई हैव डन दिस वर्क earlier also and मतलब first time in 1996 actually मतलब these rules were framed। so these rules were known as import of goods at customary rate of duty for manufacture of excisable goods when excise levy was there। so the मतलब necessarily मतलब goods to be used in the manufacturing premises for manufacture of excisable goods। however मतलब there were certain defects and flaws in the initial set of rules। तो मतलब उसमें ऐसा था कि भाई उसको क्या मतलब जॉब भाई किसी ने इंपोर्ट तो कर लिया, अब इंपोर्ट करके क्या उसको जॉब वर्क के लिए वो भेज सकता है और मानो कि अगर वो मतलब यूजेबल नहीं हो डिफेक्टिव हो तो क्या उसको री एक्सपोर्ट कर सकता है। क्या वो जो इंपोर्ट किए हुए गुड्स हैं कंसेशनल रेट पे क्या उनको वो अपने किसी और यूनिट को ट्रांसफर कर सकता है। तो ये कुछ डिफेक्ट्स थे तो कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हुआ करती थी उसमें। तो फिर 2016 में ये जो रूल्स थे इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी उनको सब्स्टिट्यूट कर दिया नए रूल्स से विच वेर मोर लिबरलाइज्ड। और जो डिफेक्ट्स और फ्लॉज थे अर्लियर रूल में उनको उन डिफेक्ट्स को रिमूव कर दिया गया। दो मतलब बॉन्ड एंड बैंक गारंटी जो पहले हुआ करती थी वो इट कंटिन्यूड, बॉन्ड एंड बैंक गारंटी कंटिन्यूड एंड बट जो डिफेक्ट्स एंड फ्लॉज थे उनको रिमूव कर दिया। मतलब ये आप देखिए मतलब यूजुअली मतलब एज अ मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग मतलब लेट मी से कि हर कंट्री ये चाहती है कि मतलब इंपोर्ट वो मतलब मिनिमाइज करे और जो भी इंपोर्ट हो उस पर ड्यूटी लगाई जाए। अब ये आप स्कीम देखिए कि इसमें आइदर देयर इज अ पार्शियल कंसेशन अवेलेबल और देयर इज अ फुल कंसेशन अवेलेबल। तो कंट्री ऐसा करेगी क्यों, क्यों वो ड्यूटी छोड़ देगी, है ना। कंट्री मतलब गवर्नमेंट इज फॉरगोइंग द ड्यूटी ऑन इंपोर्ट ऑफ सर्टेन गुड्स। तो ये जो है इट इज मतलब आइडिया बिहाइंड दिस आईजीसीआर रूल्स इज
to boost the Make in India concept. तो मेक इन इंडिया को मद्देनजर रखते हुए ही IGCR को लाया गया है और उसको मॉडिफाई भी किया गया है। तो पहले क्या होता था कि जब ये IGCR रूल्स से जब प्रोसेसेस वेर ऑल मैनुअल, तो वो हर चीज जुडिक्शन में जाना पड़ता था, एक एक डॉक्यूमेंट देने, फिर पोर्ट पे उसको देना पड़ता था, फिर पोर्ट ऑफ, मान लीजिए कि आपको 1000 क्वांटिटी इंपोर्ट परमिट की गई, तो 1000 में से मानो फर्स्ट कंसाइनमेंट आपका 500 पीसीज का आ गया, तो देन वो एक उसका मैनुअल हिसाब रखते थे, 1000 में से 500 माइनस करते थे, 500 बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होता था। तो ऑल प्रोसेसेस वेयर मैनुअल। तो अब जो नए रूल हैं, इन नए रूल्स में क्या चेंज है? वो चेंज ये है कि जब GST आ गया, तो GST आने से एक्साइज ड्यूटी का तो क्या कंसेप्ट हो गया खत्म। तो एक्साइज ड्यूटी का कंसेप्ट खत्म हो गया, तो उसका नॉमेनक्लेचर बदल दिया गया। तो इन 2017 नॉमेनक्लेचर वाज चेंज एज, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी तो एग्जिस्टेंस में रही नहीं उसके बाद। तो इसमें जो बेनिफिट था वो मतलब पहले था मैन्युफैक्चरिंग के लिए, देन इन 2017 इट वाज एक्सटेंडेड टू फॉर मतलब प्रोवाइडिंग ऑफ आउटपुट सर्विस। अगर आप कुछ इंपोर्ट कर रहे हो और वो इंपोर्ट जो है आपको कंसेशनल रेट पे अलाउ किया गया, even if you are providing an output service, you are an output service provider, then also मतलब IGCR के बेनिफिट आपको अवेलेबल किए गए। तो 2016 में फिर ये 2022 जो प्रेजेंट रूल्स हैं, these are all IGCRS 2022 रूल्स। तो फॉर मतलब स्पेसिफाइड एंड यूज इसमें वर्ड डाला गया है, और वो मतलब स्पेसिफाइड एंड यूज इज डिफाइंड इन दिस रूल्स, meaning thereby that the said goods can be used by the importer himself or can be supplied, मतलब आप उसको सेल कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं टू सम थर्ड पार्टी फॉलोइंग द मतलब दो मतलब सम प्रोसीजर इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर इट, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि जो इंपोर्टर है वो अपनी फैक्ट्री में ही उसको मैन्युफैक्चरिंग में यूज करे। ही कैन गिव इट टू अ थर्ड पार्टी, है ना। मान लीजिए किसी ने मतलब पेपर इंपोर्ट किया, तो ये जरूरी नहीं है कि वो पेपर अपने खुद की फैक्ट्री में कहीं यूज करेगा। यू कैन गिव इट टू अ मतलब प्रेस न्यूज़पेपर, जिनको पेपर की जरूरत है उनको दे सकता है। देयर आर सम यानी प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड फॉर इट, बट मतलब ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर आप मैंने इसलिए इसका बैकग्राउंड बताया 1996 से, तो आप देखिए 1996 से 2022 तक आते आते ये कैसे मतलब यानी रूल्स जो है मॉडिफाई हुए हैं, और कैसे लिबरलाइज एंड फैसिलिटेटिव मतलब व्यू से ये रूल बनाया गया है। तो इसमें मतलब प्रोसेस जो है ऑनलाइन है, बड़ी सिंपल प्रोसेस है। आपको अपने जुडिशल कस्टम ऑफिसर के वहां जाना है, और मतलब वहां जो भी आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, इट इज ऑल IGCR 1 डिक्लेरेशन टू बी मेड। और इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जो जुडिशल कस्टम ऑफिसर है, इट इज मतलब नॉट द ऑफिसर एट द पोर्ट। जुडिशल कस्टम ऑफिसर मीन्स द कस्टम वेयर योर ऑफिस और योर प्रीमाइसेस इज लोकेटेड। वहां जो जैसे आपका जुडिशनल कस्टम्स ऑफिसर है, वहां आपको क्योंकि बॉन्ड एंड ऑल दोज जो है वो तो आपको ऑनलाइन करना है, बट फिजिकल कॉपी जो है वो आपको वहां जाके देनी है। तो वहां आप अपने जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, तो उसमें मतलब वन टाइम जो मैं बोल रहा हूँ, उसमें वन टाइम में इतना है कि जब आप इंपोर्ट करेंगे तो वन टाइम यू हैव टू फिल सर्टेन डिटेल्स इन द फॉर्म IGCR 1। तो उसमें CTH है, नोटिफिकेशन नंबर है, पोर्ट ऑफ इंपोर्ट है, वो सब चीजें आप डाल देंगे। बट दैट IGCR 1 इज अमेंडेबल। आप उसको लेटर ऑन अमेंड भी कर सकते हैं अगर आपकी रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है, CTH बदल जाता है, पोर्ट ऑफ इंपोर्ट बदल जाता है, तो देन इट कैन बी अमेंडेड। वन टाइम डजंट मीन्स कि उसको अमेंड नहीं किया जा सकता है। इट कैन बी अमेंडेड लेटर ऑन ऑल्सो एज पर योर रिक्वायरमेंट। सम न्यू नोटिफिकेशन हैज कम, यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ दैट नोटिफिकेशन ऑल्सो, है ना। तो वो मतलब किया जाएगा।
तो ये मतलब इन नटशेल हम ये कह सकते हैं कि ये मतलब जैसे इसमें ना ट्रेडिंग परमिट हो गई आईजीसी रूल्स में, तो आपको मतलब स्पेसिफाइड एंड यूज इम्पोर्टेंट है, न कि मतलब मैन्युफैक्चरिंग इम्पोर्टेंट है। वो मतलब पहले जो अर्लियर रूल्स में था ना कि इट हैज टू बी मैन्युफैक्चर्ड फॉर सो एंड सो गुड्स, वो नहीं है, एंड यूज शुड बी मेट। तो ये मैंने आपको बता दिया कि डिटेल्स जो है वो अमेंडेबल है। तो वो जब हम IGCR 1 करेंगे तो आपको यूनिक एक IAN मिल जाता है, एक आइडेंटिटी नंबर मिल जाएगा। तो खाली इसमें इतना ध्यान रखना कि इफ यू हैव 10 different units pan India, so then you have to get registered for all the 10 different units and 10 different IANs would be generated. तो आप कंटिन्यूटी बॉन्ड सिक्योरिटी जो है वो आप फिजिकली दे दीजिए अपने जुरिडिक्शन में, और बाकी तो ऑनलाइन आप अपलोड कर दीजिए बॉन्ड की डिटेल्स, और वो फिर आप जो भी इंपोर्ट करेंगे वो आपका जो बॉन्ड है ना, बॉन्ड एवरीबडी मतलब एवरीबडी मीन्स द पोर्ट ऑफिसर, योर जुडिशनल ऑफिसर, द इंपोर्टर हिमसेल्फ। तो वो आप जैसे बॉन्ड डेबिट होगा तो आप बॉन्ड को देख सकेंगे, आप बॉन्ड का बैलेंस देख सकते हैं, है ना। मतलब इट विल बी विजिबल, यू डोंट हैव टू मूव एनीवेयर अलोंग विद योर डॉक्यूमेंट्स। वो सब चीज ऑनलाइन है, ये पूरा प्रोसेस जो है उसको ऑनलाइन कर दिया है। मुझे याद है हम पहले जब ये करते थे मैं तो वो फिजिकली बार बार आना पड़ता था, कुछ मिस्टेक है तो देन अगेन पीपल वुड रश टू द ऑफिस के साथ, ये रह गया वो रह गया। तो ऑल दीज थिंग्स आर नाउ एलिमिनेटेड। आपको अपना बिल ऑफ एंट्री जो है उसमें IAN डाल के बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी है, क्योंकि आपका जो सब्सिक्वेंट रिटर्न्स में है ना वो ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा डेटा वहां से। तो आप उसमें कहीं कोई गलती मत कीजिए, क्योंकि डेटा ऑटो पॉपुलेट होने वाला है आपका। तो आप जब भी अपना बिल ऑफ एंट्री फाइल करें उसके अंदर अपना डिटेल्स जो है वो क्लियरली डाल दें, बट डोंट फॉरगेट मतलब आपको IAN अपना ठीक से डालना है। तो बॉन्ड जो है वो ऑटोमेटिकली डेबिट होगा। तो मतलब एंटायर प्रोसेस जो है उसको कॉन्टैक्टलेस कर दिया गया है, एंड स्पेसिफाइड एंड यूज का जो है इट हैज बीन मतलब मेड इम्पोर्टेंट, यानी वो मैन्युफैक्चरिंग जरूरी नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग ही हो, इट कैन बी फॉर सर्विसेज, इट कैन बी फॉर ट्रेडिंग। नाउ लेट अस कम टू एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स। एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स तो रोड टैप, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स। तो CBIC जो अर्लियर स्कीम थी MEIA स्कीम, उसको रिप्लेस करके ये रोड टैप स्कीम जो है, जो कि मतलब इट इज इन लाइन एंड अकॉर्डेंस विद द WTO compliances to boost export and to ensure exporter receive refunds for embedded taxes and duties not covered by previous schemes. तो सिमिलरली ये ROSCTL है जो कि एक्सपोर्ट ऑफ गारमेंट्स एंड मेडअप्स के लिए है। इसमें ये है कि ये रोड टैप और ROSCTL में मतलब जैसे आप कुछ भी एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको जो है वो जैसे पे बैक वाउचर होगा ना, वैसा आपको पे बैक मिलेगा इसमें, एंड उसका एक स्क्रिप्ट मेंटेन की जाएगी। तो आप उसको आप अपने ड्यूटी पेमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। मतलब इफ यू आर इंपोर्टिंग तो then that can be used for payment of import duties, or otherwise matlab these are transferable and sellable also, and all the data is kept in matlab it is not manual, all the data is kept in e-scripts and unique IDs assigned to e matlab script। तो आपका जितना भी हिसाब किताब है सब एक कंप्यूटराइज्ड E-ledger में है, एंड ये भी बड़ा एक मतलब वेलकम स्टेप है कि मतलब कोई भी मैनुअल वो नहीं है, और आप उसको चाहो तो उसको आप सेल कर सकते हैं। डेफिनेटली मतलब सेल वुड बी ऑन सम डिस्काउंटेड प्राइस, बट इट कैन बी सोल्ड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड। सिमिलरली ये एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स में ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक जो है वो इंसिडेंस ऑफ कस्टम ड्यूटी एंड सेंट्रल एक्साइज ड्यूटीज जो है वो मतलब उसका जो मतलब इट ऑल एक्सपोर्ट्स नीड टू बी केप्ट जीरो रेटेड,
और मतलब जो आप गुड्स को एक्सपोर्ट करेंगे, गुड्स टैक्सेस को एक्सपोर्ट नहीं करना है, ये प्रिंसिपल है। नो टैक्स नीड टू बी एक्सपोर्टेड, ओनली द गुड्स नीड टू बी एक्सपोर्टेड। तो उसको जीरो रेटेड रखने का जो कंसेप्ट है, तो ड्रॉबैक इज इन लाइन विद दैट कंसेप्ट। तो when a shipping line files EGM, all shipping bills pertaining to the IGM wherein drawback was availed by the exporter are reflected on the drawback roll in ICS. So in line with the board's instruction, 90 to 95% of the drawback claim should be credited within 3 days from the date of submission of the claim. अब मैं मतलब मुंद्रा कस्टम्स का अगर कहूँ तो मुंद्रा कस्टम्स में 95 to 99% of the drawback claims are settled within 3 days. Well, I take pride in it कि मुंद्रा customs में मतलब 95 to 99% of the drawback claims are settled within 3 days. और मैं I am quite hopeful कि बाकी ports पे भी मतलब यही ऐसा ही कोई फिगर होगा और drawback claims जो हैं वो जल्दी से जल्दी within 3 days वो सेटल हो जा रहे होंगे, क्योंकि यही बोर्ड का, यही गवर्नमेंट का मकसद है कि सबको जल्दी ड्रॉबैक मिल जाए। एंड मतलब बिजनेस आपका मतलब इट शुड बी इन कंटिन्यूअस रोटेशन। आप कहीं मतलब योर मनी शुड नॉट बी हेल्ड अप एनीवेयर। Raju Jetli sir, sorry to interrupt due to paucity of our time. And these export incentive schemes and import benefits that those are available to importers and exporters. Means if we can go with a faster pace with these slides, means it will be because we are having a limited time. So these incentive schemes and means other slides which are pertaining to import duties or schemes or notifications, you can little bit fast pace those, sir. Okay. Yes sir, thank you sir. Okay. तो ये आप देख लीजिए, ई सीलिंग फॉर एक्सपोर्ट्स इन अर्लियर डेज, मतलब जो ई सील्स नहीं थी, मतलब पीपल यूज टू कम एंड फैक्ट्री स्टफिंग होती थी, वहाँ मतलब ऑफिसर्स को प्रेजेंट रहना होता था। तो नाउ ई सील से है, उसमें ट्रैफिक ट्रैकिंग का सिस्टम है, इट वर्क्स ऑन RFID टेक्नोलॉजी। तो इट अगेन मतलब इट एनहांसेस एफिशिएंसी एंड ट्रस्ट इन द एक्सपोर्ट प्रोसेस। ये हम पहले थोड़ा इसमें एक ही चीज है, फैसिलिटी ऑफ प्रायर फाइलिंग ऑफ शिपिंग बिल में। शिपिंग बिल जो पहले था कि भाई वो मतलब 15 डेज में पर जो जाता था, नाउ द टाइम स्पेंड फॉर द सेम हैज बीन एक्सटेंडेड टू 30 डेज। तो फास्टर प्रोसेसिंग एंड रिड्यूस रिलीज टाइम एट कार्गो अराइवल जो है वो, दिस इज द फैसिलिटी। ये अगेन सम फैसिलिटेशन मेजर्स जो लेट मी क्विकली गो थ्रू दोज मेजर्स। ये कमेटी है, परमानेंट ट्रेड फैसिलिटेशन कमेटीज हैं, PTFCs जो कि रेगुलरली एंड मतलब कन्वेन की जाती है अंडर एवरी मंथ मीटिंग इज हेल्ड एंड ऑल लोकल इश्यूज आर प्रॉम्प्टली टेकन केयर ऑफ। Similarly, for all मतलब clearance related issues, there is a custom clearance facilitation committee CCFC, और उसमें भी सभी स्टेक होल्डर्स पार्टिसिपेट करते हैं एंड मतलब इट फॉस्टर्स कोलैबोरेशन एंड स्ट्रीमलाइनिंग प्रोसीजर। तो कमेटी एम्स टू एनहांस ट्रेड फैसिलिटेशन एंड ओवरकम चैलेंजेस इन द क्लियरेंस प्रोसेस। नाउ क्विकली, दिस इज आल्सो अ वेरी important facilitation measure, advanced ruling authority। तो मतलब it is set up in accordance with WCO convention and WTO agreements, and it is a मतलब written decision on the question raised by the applicant in respect of any goods prior to import or export of goods। तो मतलब ऑब्जेक्टिव उसका यही है कि प्रिडिक्टेबिलिटी को बढ़ा दिया जाए और एन इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग की जा सके मतलब इंपोर्टर एक्सपोर्टर द्वारा। तो और आप ये मतलब इट हैपेंस इन टाइम बाउंड मैनर, ट्रांसपेरेंट, इट इज वेरी इनएक्सपेंसिव, तो रिजल्ट्स इन फास्टर क्लियरेंस ऑफ गुड्स। तो एप्लीकेशन जो है मतलब एक तो सबसे ये कि इट इज बाइंडिंग ऑन द इंपोर्टर एज वेल एज द गवर्नमेंट, है ना। तो मतलब ड्यूटी लाइबिलिटी की सर्टेनिटी हो जाती है और देयर इज मतलब लिटिगेशन जो है वो उसकी प्रोबेबिलिटी इट गेट्स रिड्यूस्ड। तो एप्लीकेशन कैन बी मेड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स and rate of duty, valuation of goods, applicability of notification,
है ना, डिटर्मिनेशन ओरिजिन ऑफ गुड्स, और चैप्टर 5B जो है इट कैन बी रेफर्ड, डिटेल्स ऑल द लीगल प्रोविजंस आर मेंशन्ड इन चैप्टर 5B ऑफ द कस्टम्स एक्ट। हाँ, ये है कि इसमें जो एडवांस रूलिंग उन्हीं को जाना है जब मैटर कहीं ट्रिब्यूनल कोर्ट में या किसी कस्टम ऑफिसर का पेंडिंग नहीं है। अगर वो पेंडिंग है तो फिर देन यू कैन गो फॉर एडवांस रूलिंग, और रूलिंग वुड रिमेन इन फोर्स एज लॉन्ग एज देयर इज नो चेंज इन द लॉ और फैक्ट्स और 3 years व्हिचएवर इज अर्लियर। तो वो तब तक वो एडवांस रूलिंग जो है वो वैलिड रहेगी। एंड मतलब नीडलेस टू से मतलब यानी कभी भी उसको एप्लीकेंट को लगता है तो विड्रॉ कर सकता है अपनी एप्लीकेशन को, और डिपार्टमेंट भी उसको नलीफाई कर सकता है अगर वो एडवांस रूलिंग बाय मींस ऑफ फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स से की गई है। तो और अगर कभी उसको नलीफाई करना है तो मतलब एक हियरिंग देके उसको नलीफाई कर सकते हैं। नाउ क्विकली द कंप्लायंस इंफॉर्मेशन पोर्टल, तो CIP कंप्लायंस इंफॉर्मेशन पोर्टल है जिसमें सभी जो पार्टनर गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो सब उसमें अवेलेबल है, और सभी मतलब HS कोड्स को कवर करते हुए, तो इसका बेनिफिट लिया जा सकता है। सभी किसी हर इंपोर्टर एक्सपोर्ट ले सकता है CIP को, इट कैन बी गॉन थ्रू। ये आप देख लीजिए, ये कस्टम कंप्लायंस वेरिफिकेशन, मतलब आप अपने गुड्स को ना रजिस्टर कर सकते हैं इवन बिफोर ड्यूटी पेमेंट। कस्टम ऑफिसर विल डू पैरेलल प्रोसेसिंग ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स, इन द मीन टाइम यू कैन गेट योर गुड्स रजिस्टर्ड, और जैसे ही आप मतलब की रेडीनेस हो जाएगी द गुड्स मतलब बी क्लियर। तो पहले आप ना ये एक आता था जब आप मतलब ऐसा एरर आता था, येट टू पे, YTP बोलते थे उसको, तो इट वाज अ वेरी ड्रेडेड फ्रेज, येट टू पे, तो योर गुड्स कैन नॉट गेट क्लियर्ड अनलेस ड्यूटी पेमेंट इज मेड। तो नाउ इट हैज बीन मेड इजियर कि आप रजिस्ट्रेशन अपना करवा सकते हैं इवन बिफोर पेमेंट इज डन। ये आईस्टैक एक मोबाइल ऐप है, इससे आप अपना डॉक्यूमेंट्स का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। ये वाणी चैटबॉट में मतलब यानी चैटबॉट फंक्शनलिटी प्रोवाइड की गई है, आप इंग्लिश या हिंदी में इसको यूज कर सकते हैं। ऑल मतलब 100% कन्वर्जन ऑफ नॉन EDI पोर्ट्स टू EDI पोर्ट हैज बीन डन, तो ऑप्टिमाइज लॉजिस्टिकल प्रोसेसेस एंड एक्सपीडिटेड फ्लो ऑफ गुड्स। ये इंपोर्ट ऑफ न्यू व्हीकल्स एंड मुंद्रा पोर्ट अभी रिसेंटली यहाँ परमिट कर दिया है मुंद्रा में। इट वाज ऑलरेडी in other ports, it was available in Mumbai, it is available, but Mundra has been now been nominated for import of new vehicle. ये एक फ्यूचर का है कि मतलब DG system data management under CBIC is proposing to introduce a system for SCZ unit to register on the IGC portal with the aim to streamline custom processes within SCZ. ये टाइम रिलीज स्टडी का डेटा है। टाइम रिलीज स्टडी अभी 2024 के रिजल्ट्स आए नहीं है, तो 23 के जो रिजल्ट थे उसमें मुंद्रा वाज द बेस्ट परफॉर्मिंग मतलब कमिश्नरेट। और अभी 2024 की स्टडी हो गई है, बट तो अभी तक उसके रिजल्ट्स नहीं आए हैं, बट मतलब ऑल कस्टम्स फॉर्मेशंस आर डूइंग वेल इन एज फार एज वेल टाइम इज कंसर्न। रिडक्शन इन ये जो पार्टिसिपेटिंग गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, मतलब ऑल दीज हैव टू कंट्रीब्यूट टू रिड्यूस द ओवरऑल dwell time. There are some मतलब we are not यानी जैसे मैंने बताया कि जो पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट है, सिमिलरली नाउ दे आर नॉन इन्वेजिव इंटेलिजेंस गैदरिंग, तो वी कीप ऑन डूइंग डेटा माइनिंग एट आवर ओन, वी डोंट डिस्टर्ब द इंपोर्टर एक्सपोर्टर। वो अपना काम कर सकते हैं, हम अपना काम जो है अगर यहाँ जहाँ भी कहीं कुछ ऐसा दिक्कत होगी तो हम बोलेंगे, अदरवाइज वी डू नॉट एंगेज एनी इंपोर्टर एक्सपोर्टर इन बिटवीन। तो यहाँ पे ये अब थोड़ा सा मैं ये बता दूं, थीम ऑफ इंटरनेशनल कस्टम्स डे था ना, उसमें मतलब ये था कस्टम्स एंगेजिंग ट्रेडिशनल एंड न्यू पार्टनर्स विद पर्पस। तो मतलब नाउ गवर्नमेंट कंसीडर्स ऑल स्टेक होल्डर्स टू बी पार्टनर्स। तो मैं बस अब इसको लेट मी एंड द PPT, मतलब एंड एज अ पार्टिंग मैसेज आई वुड लाइक टू से दैट कस्टम्स कांट अलाउ मतलब कांट अलोन डू इट, you know, it's a team effort. All stakeholders need to contribute to achieve the desired goal.
मतलब यानी without you, यानी I am talking to all the stakeholders, the importers, exporters, CHs, CBs, मतलब without you, we don't exist. So let's all be partners in progress. You stay compliant, remain trusted, and remain facilitated. Jai Hind. I think we need to close down any. Thank you, Raju Jetli sir. Ji. Thank you very much. And as we have now almost come to the end of this webinar, and I would like to just give a 2 or 3 just takeaway points from this. India is continuously craving to reach to the new heights in the environment friendly things that we can provide to the international trade and present itself as the most environment friendly country. So these all measures that the department has taken up and all these are having your inputs also. It's the participants, the stakeholders, different shipping lines, then CHAs, and everybody needs to come up with their inputs, their active participation, and to make it a success, because no system, nothing like a technological advancement put in place or a system created can be a success until and unless the participants are adopting it with elan as well as trying to improve it. So your participation, your active due diligence, and helping customs help you is something very much important. So all the facilitations that Jetli sir has mentioned, like RMS, DPD, AEO, faceless clearance, these all have one part on your end. If you are filing your documents in most clear ways, most cogent and lucid ways, there is hardly any chance that the subjectivity of officers or human intervention will be misreading it. The same way CCFCs, PTFCs, these are the platforms provided to you people. If anything is need to be addressed to the higher ups, so these are the platforms provided to you. TRS, which is another one, one more aspect that is bringing India on the platform at the international level, means we are giving one of the best services. We are getting the turnaround time to the lowest, where the trade is having the least time entangled in getting their goods at their door. So this is officers are duty bound to do their work, but at the same time stakeholders are duty bound to help them perform their duties in a better way. So I would like to I have seen some queries also, but these queries I have gone through. 2-3 are relating to very specific queries which pertains to specific sections in some field formation. Like one query is regarding AEO and the pendency of that AEO status or renewal. So I would like to suggest you, sir, that you kindly approach to the AEO section available in the field formation, because the application might be having some very a deficiency sort of thing or some query at the end of the staff there. Or meanwhile, since your last AEO status and till this time, if there is some change in your status or if there is something required to be verified by the department, so you should approach to the department, the specific section, and just try to help them sort out the issue. ROSCTPL and RODTEP, 2 queries are relating to that. Those are also pertaining to the specific section, and the concerned officer dealing hand will be able to sort it out. And it's very difficult to give very specific answer to that. So thank you very much. Now coming to the almost last end of this webinar, I would like to invite Sri Sanjay sir to give a vote of thanks to all the participants. Sanjay sir, over to you. Thank you, Pradeep. Good afternoon, everyone. I'm Sanjay Kumar, Assistant Director, DGTS Mumbai Zonal Unit. First of all, on behalf of DGTS Mumbai Zonal Unit, I extend my heartfelt thanks to our Principal AD, Sir Sri Sanjay Rachi, sir, for his encouragement, guidance, for organizing this webinar. Thank you, sir, for your kind support. On behalf of DGTS Mumbai Zonal Unit,
I express my sincere thanks and gratitude to both our trade panelists, Sri Dushant Molani ji, President BCBA and Chairman FFAI, and Sri Santanu Bhatkamkar ji, Chairman SHM MSDC, for participating in this webinar and presenting their viewpoints on the topic. And last but not least, DGTS Mumbai Zonal Unit expresses its sincere and heartfelt thanks to Sri Raju Jetli sir, Assistant Commissioner Mundra Ruston, for delivering such a wonderful presentation on the topic. I'm sure trade must have immensely benefited from the knowledge you shared through this presentation. Now it's time to wind up the proceedings. With the kind permission of Principal Lady, sir, we would like to bring this session to an end. Thank you. Thank you all. Thank you all. Thank you, sir.